फैंसी चीजें नहीं कर रहा। Are you will twin? I totally forgot to share with you guys that. So basically, I am going to. Hi guys, welcome back to my channel. If you're seeing this face for the very first time, hi, my name is Rutuja and I hope you guys are doing fantastic. So this is the first time that I'm standing up and filming a video, like a vlog, and I'm so excited, as you can see, because as you've already read by the title, in today's video, I am going to take you through everything that I do before I travel. I don't know why I said it the way I said it, but basically I am preparing for upcoming travel and I just thought I'll do a preparation vlog with you guys. So basically this is going to be a get ready with me for a vacation type of vlog. इसमें मैं आपको सारा preparations बताऊंगी, right from the shopping, packing, self-care and everything that I do before I travel. So basically this is different from my other travels because this is the first time that I'm going on a trek and I'm super excited to do this because this is kinda an adventure for me because मैंने बेसिक ही ट्रैक्स किए, वो भी आसपास ही अपने महाराष्ट्र में, बट दिस इज एंटायरली ऑन द नॉर्थ साइड. सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए. आई डेफिनेटली टेल यू गाइज द लोकेशन इन द आउटरो, सो मेक श्योर यू आर वाचिंग द एंटायर वीडियो. थोड़ा तो सस्पेंस बनता है, राइट? सो या यू गाइज, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. मैं ये इंट्रो अभी फिल्म कर रही हूँ पैकिंग के दिन पे. सो बेसिकली मेरा शॉपिंग वगैरह हो गया था. सो नाउ आई विल बी अटैचिंग द फुटेज विच आई टुक व्हाइल आई वाज शॉपिंग. सो या एंजॉय दैट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पैकिंग. इतना कुछ नहीं लेना है. फैंसी चीजें नहीं कर रहा. किधर है वो? दैट साइड. चल, ग्रीन ही अच्छा लग रहा है. इट्स पॉपिंग. कोई ऑप्शन है क्या? रेड. ओह थैंक्स. ग्रीन इज बेटर. टेक ग्रीन. वो सेक्सी है. इट लुक्स नाइस. यप. आई एम सेइंग आई एम नॉट लाइकिंग दिस. ये राउंड राउंड रेड. बाकी इट्स नाइस. ऐसे नहीं डालते रू. You want a बड़ा साइज ना? आई थिंक उधर है. 40 लीटर्स. ये लास्ट टाइम बहुत कलरफुल ऑप्शन थे. सौरभ थोड़ा ब्लैक के परे हट. ब्लैक दाग नहीं लगेगा. वी हैव टू टेक 60 ना? 60 to 70. You are going to take that. तो take a छोटा one for me. It's nice, huh? No, I don't like the color. ट्रैकिंग लाना चाहिए रे. तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्यूटोरियल दे हमें बैग का. चल, ऐसे दिखता है, वैसे दिखता है. Oh my god. Keep your clothes over here. Keep your shoes over there. Very handy. No, stop. ये क्या लाचा. Stop fooling around ना. चल अभी फटफट ले. हाँ, I like that and ये. तेरे को बोल रही हूँ ब्लैक के परे हट और मेरे को ये ब्लैक चाहिए. ये वाला. ये तेरा ये है? नहीं नहीं, मेरा दूसरा है. मतलब इतना अनपढ़ है. हाँ यार, जो तू लेने वाला है. 80 लीटर है वो. चलना यार, मेरे को फिट कर लो उसमें. करो बस. इधर क्या रखना? अभी ट्यूटोरियल दे रहा था. इधर के साइड का ऊपर से साइड का. खोल के देखो उसको पूरा अच्छे से. वेरी टाइम शो. वेट लेट मी चेक. हाँ हाँ श्योर. तो और कैसे मिलने वाला है? ऐसे तो मिलने वाला है. तुझे वैसा चाहिए क्या? वो फैंसी शूज तो ले, वो ही ले फिर. तो ये क्यों देख रहा है? आई थॉट यू ब्रोक इट. इसका ना इसका सब डाइसेक्ट करने में 1 घंटा लगेगा ये बैग. आई टोल्ड यू. अच्छा ये होगा बस. अभी टर्न. हाँ अभी अच्छा लग रहा है. टर्न. हाँ नाइस. So heavy pieces. So
एक हाथ से मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, छोड़ यार। हाँ बट वुडलैंड से कम हैवी है। Obviously. Decathlon है। हाँ तो तू ले, यही अच्छा लग रहा है मुझे। डू रैम्प वॉक। मुड़। ओह फैंसी। सी दूसरों का आई कैन डू फटफट। चल चल मेरा भी लेना है, चल चल। Show your skills. Shut up. I'm very good at it. I can see. That's why I wear shoes so regularly. Sexy, no? How is the look? Nice. Looks good. Click a picture and have to send it. Show your घर soul. पे. How will I show my soul? It's over here. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नो रे, सब में से यही अच्छा है। ये भी अच्छा है। नो, I love those. एक तो मेरे को अच्छा है ना। मुश्किल से कुछ पसंद नहीं आता, उसमें भी ऑप्शन नहीं होता। So I'm taking this one and he's taking that one. ब्लू वाला ही ले। इसमें तो ऑब्वियसली ब्लू ले, ग्रीन नहीं। I am taking this cap. The beige one, huh? This looks nice. Obsessed with beige color. Yeah, I'm taking it. You also take now. I have one beige. Are you able to win? I have beige. The following day. So you guys, this is what I have done by far. So basically I've clubbed all my outfits. So ये सारे मैंने पेयर्स बना के रखे हैं outfits के, जो मैं उधर जाके पहनने वाली हूँ. एंड एक एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके रखा है आइटम, बिकॉज वी आर गोइंग इन मानसून सीजन. एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, बिकॉज यू नो आई लव वेयरिंग शॉर्ट्स. लाइक मेरे को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं शॉर्ट्स में ही होती हूँ. तो आई एम जस्ट कैरिंग 2 जैकेट्स ऑल्सो उसके लिए. सो दिस वन आई गॉट फ्रॉम H&M. ये फुल जैकेट है. आई गॉट दिस लॉन्ग बैग. एंड दिस वन आई गॉट इट फ्रॉम हिल रोड. ऑल्सो आई गॉट इट लॉन्ग बैग. एंड दिस वन इज अ क्रॉप जैकेट यू गाइज. एंड या वो सारे नैपकिन्स एंड हैंडकरचिफ है. एंड इधर वी हैव माई शूज़, जिसके बिना मैं ट्रैकिंग कर नहीं पाऊंगी. सो या एज यू ऑलरेडी सॉ इन द व्लॉग, आई इन्वेस्टेड इन this pair and I just fell in love with them the moment I saw it, so I knew I had to buy them. And yeah, this is how they look like. If you're looking for trekking shoes, you should definitely visit Decathlon. You will find your pair, and I'm telling you, the quality is just amazing. And that is the bag that I'm going to take. I know ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, but वो मेरी मॉम का बैग है. So my mom is a frequent trekker, you guys. So hence उतना बड़ा बैग मॉम के पास already है, because she keeps on going on long treks. So I'm just going to take her bag for this trip. Basically, I've just taken all the comfortable items which I have in my closet. And as you saw yesterday, मैंने 3 पैंट्स उठाए थे H&M से. So first one is this one, एक ये है, and एक वो trekking पैंट है. So I'll show it to you guys on my Instagram. I'll post pictures, so उधर मैं tag कर दूँगी, so आपको समझ जाएगा. And then what else we have? Yeah. So here I'm taking, ये भी मैंने कल H&M से ही लिया था, as you already saw. And here I've taken 4 pair of socks, because obviously I'm going on trek. It's a monsoon trek, so I'm just keeping spare socks with me. And then I might add 1 more pair. And then I got this cap from Decathlon, as you saw already. So I got this for 159. इसका quality इतना great नहीं है, but I just like the color, so I took it. And then this cap, this beanie. So basically my dad had got this for me when I was very young, so he had got this from London. And मैं तब से इसको पहनते रखती हूँ. Like ये बहुत बड़ा है, so अभी मेरे लिए proper fit होता है. तो whenever I'm going to a place which is cold, मैं ये definitely लेके जाती हूँ मेरे साथ. So I'm going to carry this beanie. And then this is the item which I cannot travel without. This is a laundry bag. I love to stack up on laundry bags, because मैं ये सारा जो मैं पहनने वाली हूँ वो मैं इस पे बाद में dispose कर दूँगी. And then again here I have just added my inner garments in my laundry bag. So this is a black laundry bag we have over here. मुझे अभी तक sort out करना है, but मैंने बस ये निकाल के रखा है सारा साथ. And this is a pair of sunglasses. I'll show it to you बाद में. Again ये सारा मैं Instagram पे ना फोटोज डालने वाली हूँ, so make sure going and following me over there. मैं सारा डिटेल्स वगैरह सारा उधर ही दे दूँगी आउटफिट्स का. And ये तो मेरे pouches है which I got from Mini. So I just love the texture. I mean just look at it. इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा
awesome है, इसलिए I'm going to take one more pair of flats. I think that's that. Okay guys, so as you saw मैंने सारे मेरे मेन चीज़ें मैंने अच्छे से निकाल के रख दी है and I still have time to do my packing, so I'm really happy that this time I am on time. And basically today is Monday and I'm traveling on Wednesday. So when I was packing मेरे को थोड़ी सारी चीज़ें याद आई जो मुझे लेनी है, so I've just made a things to buy list. So वो अभी मैं जाके सारे ले लूँगी आइटम्स जो जो मुझे लेने हैं. And I think I totally forgot to share with you guys that I am going to take a 20 लीटर वाला backpack as well, जिसके साथ मैं ऊपर जाके ट्रैक करूँगी. Now obviously you're not supposed to carry this entire huge bag and इसके साथ आप ट्रैक नहीं करोगे. ये जो बड़ा बैग होता है वो कैंप साइट पे ही रहता है and usually you trek up with 20 लीटर वाले bags. So yeah, also this time I am feeling super happy and super relaxed because मेरा बहुत सारी चीज़ें हो गया है and I still have one day to go. And मैंने वो one day मेरा पूरा सेल्फ केयर के लिए रखा है because I have to indulge in self care. And the thing is कि मैं पहले ना सारा एक ही दिन पे मैं फिगर आउट करती थी, लाइक सेल्फ केयर, शॉपिंग, पैकिंग, एवरीथिंग. बट ये टाइम ऐसा नहीं हुआ बिकॉज आई हैव माई लेक्चर्स गोइंग ऑन, आई हैड माई एग्जाम्स गोइंग ऑन. सो आई जस्ट कैटेगराइज डेज ऑल्सो कि ये दिन पे मैं शॉपिंग करूँगी, ये दिन पे मैं पैकिंग करूँगी एंड ये दिन पे मैं सेल्फ केयर करूँगी. So by far everything is going super nicely, so I'm very relaxed mentally. Now I'm just going to go and get ready for my lecture and I'll catch you guys in the evening. Hi guys, so I'm back after a long tiring day and I am just happy कि मैंने सारा जो मेरा to do list में था वो सारा टिक कर दिया है. सिर्फ 2 चीज़ें बाकी हैं, उसमें से एक I'm going to do right now which is oiling my hair. So you guys, I love to oil my hair before I go to sleep. And अभी एक वीक में मेरे को बाल धोने नहीं मिलेंगे नॉर्थ में obviously. So I'm just making sure कि मैं अभी अच्छे से मेरे स्कैल्प को nourishment provide करूँ. And then tomorrow I'm just going to go to a salon and then get my hair blow dried. So to oil my hair, I'm not just going to use a regular oil, but I'm going to use a product from Mamaearth, which is their newly launched onion oil boosters for hair growth. So this is a super non-sticky product, you guys, and once you start applying it on your scalp, it is just going to absorb into your scalp within seconds. So I'm just going to add few drops of it into my regular oil, and then I'm just quickly going to start massaging the product into my scalp for good 5 to 10 minutes. Mamaearth's Onion Hair Oil Booster is crafted with Redensil, which helps to increase blood circulation. It also comes with 5x power of onion oil, which helps to reduce hair fall and promotes hair growth. This product basically boosts the effectiveness of a regular oil and accelerates hair growth and makes your hair thicker and healthier. So you guys, if you want to see quick hair growth results and if you don't want to wait forever, you should definitely invest into the Mamaearth's Onion Hair Oil Booster. You can use my coupon code RUTU2022 to get a 20% off on Mamaearth's website. Also, all the Mamaearth products are available on Amazon, Nykaa, Mamaearth's website and also on their app. Every time you place an order on Mamaearth's website, Mamaearth will link your order to a tree that they plant, and by 2025, Mamaearth is planning to plant 1 million trees as a part of their Plant Goodness initiative. Also, since Mamaearth is a plastic positive brand, it recycles more plastic than they use. So yeah, you guys, that was it for today. I'll catch you guys tomorrow in the morning and then we will indulge in some more self-care. So yeah, good night, bye bye. The next morning. Good morning. So this is the next day. Last night I took a bath for 1 hour and I nicely exfoliated my skin. So I'm done with my face shaving routine. As you saw, I've just added few steps. If you want to see my in-detail face shaving routine, it's already up on my channel. I'll be linking the video in the description box below. And I've decided that I'm not going to do a lot of things on my skin, so I'm just going to let it breathe. तो मेरे जो face shaving routine में था वो मैंने सब कर लिया. So अभी का plan यही है that I'm going to go and get my hair blow dried and I have to get my whole body waxed. तो ये दो चीज़ बचे हैं जो अभी मैं जाके करने वाली हूँ and then we will be good to go. चलो, now let's just get the last steps done. Later that same evening. You guys, that pretty much brings us to the end of the video, and I know this video is going to be a long video, so if you have made it by far in this video, thank you so much for watching. And you guys, finally I'm going to reveal the location. So basically I'm going to Kasol and I'm going to do the Kheer Ganga trek. I'm also visiting Kasol, Kheer Ganga, Tosh and Manikaran, so I'll be covering all the locations within 7 days. 2 दिन हमारे ट्रैक में जाएंगे and
दो दिन ट्रैवलिंग में जाएंगे बिकॉज आर पिट स्टॉप इज दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली वी हैव 12 आवर्स का लॉन्ग जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कसोल. सो या 2 दिन तो ट्रैवलिंग में जाने वाला है. बट या आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस न्यू एडवेंचर एंड या आई होप यू guys are excited to see my vlogs from Kasol. And also make sure you are following me on my Instagram because obviously I'll be uploading a lot of stories from Kasol. I'll definitely make a highlight, so if in case you are watching this video late, you know where to find all the Kasol stories. So yeah, you guys, that pretty much sums up my today's video. I am super duper excited, super duper pumped up and all prepared. So yeah, you guys, if you like this video, and I know you did because इतना अगर आपने पूरा देख लिया, make sure hitting the like button, subscribing to my channel and also hitting the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video on YouTube. Stay tuned for all the exciting content that is going to come through your way from Kasol. And yeah, I'll see you in my next travel video. You guys, until then, live and let live. Take care, bye.